So my screen visible to all of you? Yes, sir. Okay. So we started our discussion on Unit 1 of PLC, and that's the basic introduction programmable logic controller. And in this, we discuss old relay system and compared with the PLC based panel. And we saw that there was issues in old relay system, and that is why, as we know, that need is the mother of invention. So it was required to find out new, technique for making the system error free and more robust and more automated. Then PLC-based parallel system were, invented, and we discussed this and these details. We discussed already this, and we also discussed advantages, disadvantages. And this is the overall PLC block diagram. We discussed that it has input, which is sensors or another any other kind of push buttons, and it has output like contractors, alarms. And since the main function of this distribution system is relays based circuit breaker system, so the control of relay operation is very, very important for us to understand. So already you studied these details in one of your course in last semester, but since we are going to more focused on the operation of relays and in automated system in terms of PLC, so we discuss a you know brief summary, just brush up the fundamentals of relays, and that is what we discuss. Okay, so now coming to the next topic, that is central processing unit. Now central processing unit, same as computer system, but then it has little difference. So the brain of the system has main three subparts. One is microprocessor or microcontroller, in which all the computation is done. For example, let's say you want to stop the operation after a certain number of time or certain number of products are manufactured, then microcontroller is programmed in such a way that after this much cycle it gives the command to open the circuit and the relay works accordingly. So that's the main part of central processing unit. The other uh, data is memory. So where you will keep all the information, that is under memory. So as in the case of PC, it has the memory, right? Then we have power supply. So the CPU needs power supply. As you can see in your PC or in your laptop or in your mobile, you need a charger. So there are SMPS basically connected to give the supply to the CPU and memory. Otherwise, it will not work. So it has lot of internal circuits which needs biasing, and that is why this supply is required. So you need to have a power supply. Now this power supply uh, could be given from a battery or could be like charger. Normally we connect the PC system in our home or laptop charging in our you know houses in such a way that the normal supply coming at our houses is AC, and it converts AC into DC and regulates at the required DC level. So since CPU, I mean laptop and mobile are having batteries, but since these computer or CPUs do not have any battery backup, so what it does, it converts AC into DC and supplies the power. So if you do not have any UPS backup or something, if power goes, then it will shut down. What we are seeing normally in our with our PC and with our laptop. So we need. So in PLC, if you are asked that what is CPU, so you have to elaborate that in CPU for PLC there are three components, that is microcontroller or microprocessor, then memory, and then power supply. So once you have the CPU, then you need to have a programming device.
So I guess in this semester you are studying microprocessor. So you will learn, how the programming is done. So in most of the cases it is done manually. You have a keyboard kind of thing, and you enter the data, and there are certain methods for entering the address and data, and then you do it. In microcontroller, which I'm using in my lab, and many of my students are doing projects. So what we do is we have a programmer, device which burns the data from the PC to the chip. Okay, so we say that it burns the program from data to chip. Now in nowadays, the new type of simulation tools have come that is called real-time simulator, and there whatever program you run, a circuit you run on your simulation tool in your PC, so it has connection with that PC and real-time simulator. It has a processor, and with the use of processor, you'll be able to plot the waveforms what you are getting on this PC. Same you'll plot on your CRO. So basically, you are connecting a whole circuit in your computer, but at the same time, you'll be able to get those signal out in the CRO in real time. So that is another kind of thing. So, but here in the case of PLC, programmable logic controller, we use programmer monitor PM. That is a device used to communicate with the circuit of the PLC. So that's PM, called PM, programmable monitor. So this could be handheld terminals, industrial terminals, or personal computer exist as PM devices. So lot of flexibility is there. So whatever you use for programming a PLC, that is called PM. Now the third is input-output module. So we have a CPU in between, as we discussed, which has three components: memory, microcontroller, and the power supply. Then I have a programmable device PM using which I am programming the CPU, and so that it can function accordingly. And then at the same time, I need to have input and output terminals. I mean, what input it will sense, and after doing execution, what output it will give. Right. So that is the basically that is the input output module requirement. So the input module has terminals into which outside process electrical signals generated by sensors and transducers और इंटर फॉर एग्जांपल अभी मार्केट में अगर आप देखें तो बहुत सारे सेंसर बेस्ड चीज़ें आ रही हैं सो व्हाट इज द सेंसर बेस्ड थिंग आप किसी कमरे में इंटर हो रहे हैं एकदम से लाइट जल गई सो व्हाट इज दैट यू आर इनेबलिंग द सेंसर that you have entered now automatically light has turned on okay जैसे ही आप हटे तो लाइट बंद हो गई सो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर गिविंग a kind of signal through sensors. Similarly, it could be many other things like in solar inverter case, you are getting a continuous signal from grid side. Grid से voltage और current आप sense कर रहे हैं और वो आपके CPU में अंदर जा रहा है जैसे ही वो stop हो गया so it means it will take some action, right? So that is transducer, there are sensors, that is all working. So the output module has terminals to which output signals are sent to activate relay, solenoids, various solid state switching devices, motor and display. So this is the output. So the output module, once you give the input, then your CPU will execute the program as per your desired ऑपरेशन जो भी आपने उसमें प्रोग्राम लिखा है उसके हिसाब से वो उसको ऑपरेट करेगा और फिर वो आउटपुट पे रिले के सोलेनॉइड को या किसी और सॉलिड स्टेट स्विचिंग डिवाइस को जो भी आपने प्रोग्राम किया हो वो उसको एक्टिवेट कर देगा या डीएक्टिवेट कर देगा वट एवर इज योर रिक्वायरमेंट सो दैट द आउटपुट यू हैव रिलेज at the output you have the thing which you want to elaborate, right? Then the actual operating process under PLC control can be thousands of feeds from the CPU and its certain module. Okay, so let us see. So there are how many inputs are possible? For example, आप कई चीजें इनपुट करना चाह रहे हैं और बेस्ड ऑन विच you want to give one output. मिसाल के तौर पर आप जो है वो you want to shut down a solar inverter connected, so you need to have many inputs. You need to have one input as
grid current, the other input could be grid voltage, the third input could be solar current, solar PV issues. So 5, 6 inputs are there. So you may need to have more than one input, right? And that is the real case. In most of the cases, you will need more than one input. So what is available in the market? There are typically 4, 8, 12, 16 terminals per module. Those are available at the input side and the output side as well. There may be an equal number of or different number of input output terminals for PLC input और module. It could be same. 4 input है 4 output है. It could be different. 4 output है 4 input है 2 output है. और 2 आउटपुट है 4 2 इनपुट है 4 आउटपुट. आई मीन डिपेंड्स. जरूरी नहीं है कि अगर आपने 16 टर्मिनल वाला मॉड्यूल लिया तो आप 16 के 16 टर्मिनल्स को आप यूज करें. You will use as per your need. Okay, so that is the input output module. So for a smaller system, the input output terminals may be included on the same frame of CPU. So जैसे ये दिखाया जा रहा है, ये Siemens का ये स्मॉल मॉड्यूल है, इसमें ज़्यादा इनपुट नहीं है, तो कोई बहुत बड़े सिस्टम को आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं. सो दैट इज एवरीथिंग इज माउंटेड ऑन द सेम बोर्ड. मगर अगर किसी बड़े चीज को आप कंट्रोल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यू हैव अ वेरी बिग फैक्ट्री और यू हैव अ वेरी बिग सिस्टम जहां आप स्कैडा बेस्ड चीजों को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, देन यू नीड टू हैव अ सेपरेट आउटपुट मॉड्यूल भी सेपरेट होगा, इनपुट भी सेपरेट होगा. एज यू कैन सी हियर, दिस इज यू नो as you can see, this is input and this is output. और यहाँ पर ये सब inbuilt है, ये input है, ये output है. All are inbuilt, on the same thing. So that is the different. But these are the essential parts. So अक्सर वाइवा में पूछा जाता है कि सब input output क्या क्या होते हैं, तो जवाब उसका ये है कि input could be you know various kind of sensors or push button or any kind of transducer which inserts the electrical signal into the processor. And then the output is, it could be a relay, it could be a motor, it could be a solenoid, depends on what we want to do. Okay, is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Now coming to PLC input encoder and then PLC decoder. So have you studied this encoder decoder in digital electronics paper? Yes, sir. तो क्या होता है encoder, जरा बताएं. सर Anybody? मल्टीप्लेक्सर ही सर एक मल्टीप्लेक्सर होता है जिसमें डिफरेंट इनपुट्स के लिए डिफरेंट आउटपुट्स मिलते हैं. मतलब सर इनपुट्स जो है हम डिसाइड कर सकते हैं कि किस टर्मिनल पे कौन सा देना है, उस हिसाब से आउटपुट्स मिलते हैं. क्लियर नहीं हुआ सर ये आंसर कंफ्यूजिंग है, और क्लैरिटी के साथ बताइए. और कोई बताए एनकोडर आप? मतलब सर एक डिवाइस रहता है सर. हम्म, फॉर एग्जांपल हम एक पर्टिकुलर सिग्नल के लिए एक हाँ. पर्टिकुलर बाइनरी कोड डिसाइड कर देते हैं. तो एनकोडर उस पर्टिकुलर सिग्नल के लिए वो कोड देता है. फिर डिकोडर क्या करता है कि वो कोड उस पर्टिकुलर सिग्नल के लिए डिकोड करके बताता है कि ये जो कोड है वो उस पर्टिकुलर सिग्नल के लिए बिलोंग करता है. तो वो उस पर्टिकुलर फंक्शन को करेगा फिर. नहीं, अब आप मुझे ये बताइए कि आपके पास 8 इनपुट हैं, यस सर. ठीक है, या लेट्स से 3 इनपुट है, और आपको ओके. जो है वो एक ही चैनल है, एट अ टाइम एक आउटपुट मिल सकता है, तो उस केस में इनकोडर यूज होता है, डिकोडर यूज होता है? सर कैन So रिपीट फिर सर. से repeat इनकोडर. करें. मैं कह रहा हूँ कि यू हैव 8 इनपुट्स और 3 इनपुट्स लेट्स से, ओके. ठीक है, Okay, और sir. आपके पास चैनल एक ही है, यस. यानी आउटपुट Yes, sir. पर एट ए टाइम एक डेटा जा सकता है. ओके. आप तीनों को एक साथ आउटपुट पर डिस्प्ले नहीं कर सकते, तो कैसे So करेंगे? encoder, sir. एनकोडर. अच्छा, तो मल्टीप्लेक्सर और एनकोडर में क्या डिफरेंस है?
सर मल्टीप्लेक्सर में 2 की पावर n इनपुट्स जो होती हैं उसके लिए एक ही आउटपुट आता है, हाँ एनकोडर में 2 की पावर n इनपुट्स के लिए n आउटपुट्स आते हैं। हाँ, सो इट मीन्स आपको जो है वो इनकोडर अगर यूज करना हो तो इनकोडर में टू द पावर एन, यानी अगर मान लीजिए 3 है आपका, n इज इक्वल टू 3, तो 8 इनपुट हुआ तो 3 आउटपुट हुआ। दैट्स व्हाट यू वांट टू से। ओ जयराम। हाँ जी, इफ n इज इक्वल टू 3 तो आपके हिसाब से टू द पावर n यानी 8 इनपुट हुआ और 3 आउटपुट हुआ, राइट? यस सर। दैट इज इनकोडर। So it's decoder. It's for decoder. हाँ, ये तो इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, क्योंकि डिजिटल में जो आपने पढ़ा है वो भूल गए होंगे अभी तक। आप वैसे भी ऑनलाइन ने कबाड़ा कर रखा है पूरा, तो वो अब वो ब्रशअप होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा था कि डिजिटल के ये बेसिक फंडामेंटल जो है इसको ब्रशअप कर लीजिए। इनकोडर क्या होता है, डिकोडर क्या होता है। एक मिनट। हेलो। गुड आफ्टरनून सर, मैं रिचा बात कर रही हूँ नेट से। हाँ बोलिए बोलिए। इज इट गुड टाइम टू टॉक? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सर, एक्चुअली हमारा टेंडरिंग प्रोसेस है कुछ साइट्स में। अच्छा। तो उसमें कुछ एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स को भी हम मेंबर रखते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो सर मैं क्या आपका नाम सजेस्ट कर सकती हूँ? कर दीजिए कर दीजिए। कब है? सर अगर कल रखिए सर, आप टाइम बता दीजिए सुटेबल जो भी है। कल ही रखेंगे इतनी जल्दी? ऑनलाइन सर रखेंगे, कोई ऐसा ऑनलाइन है? हाँ तो ऑनलाइन कब रख सकते हैं आप? सुबह रख लीजिए या कब रखें? हम लंच के बाद सोच रहे थे 3 बजे या 4 बजे। 3 बजे या 4 बजे? तो रख लीजिए, 3 बजे रख लीजिए। 3 बजे सर, ओके। हम एक बार आपसे मॉर्निंग में और कंफर्म कर लेंगे। हाँ कंफर्म कर लीजिए। ठीक है ठीक है, ठीक ओके है, ओके। ओके सर। So that is why these fundamentals are very very important to understand. Anyhow, point हम यहाँ पर ये बता रहे थे कि जैसे आपके पास कई इनपुट हैं और एक आउटपुट है, आई मीन कई इनपुट हैं एंड लेस नंबर ऑफ आउटपुट्स। तो आपने क्या किया, उसको आपने इनकोड किया कि डिकोड किया? एनकोड। एनकोड सर। हैं? एनकोड सर। 3 आउटपुट है, 3 इनपुट है और 8 आउटपुट हो गया, तो ये आपने इसको इनकोड कर दिया। और उसी 8 आउटपुट को 8 आउटपुट को जो है वो आपने एज एक सिस्टम में इनपुट दिया और आउटपुट पे 3 आ गया, तो ये क्या हुआ? सर ये इनकोडर हुआ। दैट्स एनकोडर। और पहला वाला जो मैंने बताया था सर वो डिकोडर decoder था. डिकोडिंग हो रही थी वहाँ पे। डिकोडर। राइट। तो अभी तो आप लोगों ने उल्टा बताया था। एनीहाउ ये इनकोडर डिकोडर भी इस पे यूज होता है, सो दैट इनपुट एंड आउटपुट कैन बी कोडेड प्रॉपर्ली। अब देखिए बहुत डिफरेंस है नॉर्मल कंप्यूटर में और पीएलसी में। ये इनपुट पर आप देख रहे हैं डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम है, और इसमें इनपुट पर आप कीबोर्ड होता है या पेन होता है या माउस होता है, जैसे अभी हम यूज कर रहे हैं। देन एक डिस्प्ले होता है, प्रिंटर होता है, प्लॉटर होता है। ये चीजें होती हैं नॉर्मल कंप्यूटर सिस्टम में। बट देन इन पीएलसी, although you have a CPU, although you have an input output device, but there is a difference in terms of कौन से इनपुट और कौन से आउटपुट होते हैं। सो पीएलसी में आपका इनपुट होगा मोशन सेंसर, साउंड सेंसर, हीट सेंसर, लाइट सेंसर, और कुड बी एनी अदर काइंड ऑफ इनपुट। वहाँ पे कोई कीबोर्ड नहीं होगा। You'll not have any keyboard or any light pen or any mouse, कुछ नहीं होगा। It will have a real-time signal coming from your automation system, and through sensors it is getting into the process control unit, that is central processing unit. And फिर उसके बाद जो भी प्रोग्राम आप उसके अंदर लिखेंगे, based on that program, it will give the output. So whether you are giving it controlling the motor operation, या आप रिले के सोलेनॉइड को कंट्रोल कर रहे हैं, या किसी हीटिंग एप्लीकेशन को आप कंट्रोल कर रहे हैं, या किसी लाइट को आप कंट्रोल कर रहे हैं, आप डिम कर रहे हैं, या कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आप कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये उसका आउटपुट होगा। इट विल नॉट बी अ स्क्रीन, और इट विल नॉट बी अ प्रिंटर, इट विल नॉट बी अ प्लॉटर। So it will be basically physical object which you are controlling through PLC.
right? So that's the difference between input output of a computer and input output of a PLC. Okay, so जो CPU है more or less that remains same because CPU के अंदर CPU के अंदर जो है I mean that is you have a central processing unit, you have a microprocessor or controller, and then you have a memory and you have a power supply. So that more or less is same. Okay. So embedded system और कंप्यूटर में फर्क होता है वो डिफरेंस मैंने पहले दिन आपको बताया था. So PLC is more or less towards embedded system operation and computer is towards basically a digital computer based system. अब आते हैं मेमोरी. अभी माइक्रो प्रोसेसर में आपने पढ़ा होगा, डिजिटल में पता नहीं आपने शायद नहीं पढ़ा हो कि जब आपका कोई मेमोरी एलिमेंट होता है तो इस मेमोरी एलिमेंट में डिपेंड करता है कितने बिट का वो है, 16 बिट, 8 बिट, 16 बिट, 64 बिट. मिसाल के तौर पर अगर आप पीसी खरीदने जाएं या आप लैपटॉप खरीदें तो आप देखते हैं कि 64 बिट का है या 32 बिट का है. तो बेसिकली इट्स अ मेमोरी साइज, राइट? कितने बिट का रजिस्टर है उसके अंदर जो मेमोरी को हैंडल कर सकता है. तो इस पे दो चीजें देखने की होती है. नंबर वन कि आपका एड्रेस कितने बिट का है और नंबर टू मेमोरी साइज कितने बिट का है. मिसाल के तौर पर इसको मैं बहुत ही सिंपल मिसाल से समझाता हूँ क्लास में अक्सर जब मैं डिजिटल पहले पढ़ाता था. तो जैसे आपको मोहल्ले में आपको किसी के घर पता करना है, एक तो उसका एड्रेस मालूम करेंगे आप कि घर का एड्रेस क्या है, इस गली में इस नुक्कड़ पे ये हाउस नंबर है, आप वहां पहुंचे. उसके बाद घर के अंदर आप घुस के देखेंगे कि कितना बड़ा घर है, एक मंजिल है, दो मंजिल है, एक फ्लैट है. दैट व्हाट यू विल चेक. उसी तरीके से ये मेमोरी होती है. पहले आप एड्रेस से लोकेट करते हैं कि कौन से लोकेशन पे आपको जो है वो डेटा रखना है या वहां से लेना है, और फिर उस डेटा का साइज कितना है. जैसे मकान कितना बड़ा है उसी तरीके से डेटा का साइज कितना है. तो देन एड्रेस इज आल्सो इम्पोर्टेंट एंड the width is also important. So both are important. तो इसलिए कभी भी मेमोरी को जब लोकेट किया जाता है तो वो लोकेट होता है उसके एड्रेस से और फिर उसके नंबर ऑफ बिट्स कितने हैं, कितने बिट्स से आप कर रहे हैं. तो यहाँ जैसे सॉलिड स्टेट मेमोरी इसी को कहते हैं. So 1 kilobyte byte is 1 kilobyte is equal to 1 kilobit is equal to 1000 bytes, right? तो ये इक्वेशन होती है जो आपने उसमें डिजिटल में पढ़ा होगा. दैट इज हाउ इट इज डन. सो ये 8 बिट का जो होता है वो बेसिकली 1 के बाइट अपने अंदर स्टोर कर सकता है. तो कभी भी मेमोरी की जब बात आएगी तो दो चीजें हमेशा आपसे पूछी जाएंगी, किस एड्रेस पे है और क्या आप उसमें एंटर कर रहे हैं, तो कितना साइज है. ये माइक्रो प्रोसेसर के एक्सपेरिमेंट में भी आप करेंगे. तो फर्स्ट यू हैव टू लोकेट द एड्रेस एंड देन फिर उस एड्रेस से आपको इसके अंदर पॉइंटर होता है. अगर आप, मुझे नहीं मालूम आपने कितना पढ़ा है अभी, तो एक पॉइंटर होता है, वो पॉइंटर जाता है, स्टैक पॉइंटर बोलते हैं उसको, वो जाता है मेमोरी लोकेशन पे. जब आप मेमोरी लोकेशन एंटर करेंगे तो वहां जाके वो क्लिक कर देगा. ओके, नाउ अब इस पर क्या करना है, वहां से डेटा उठाना है, वहां कोई ऑपरेशन करना है, वहां पर डेटा रखना है या वहां कोई रिजल्ट स्टोर करना है. ऑल थिंग्स विल बी डन. सो एड्रेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड देन साइज ऑफ द मेमोरी इज इंपॉर्टेंट. सो मार्केट में जो अवेलेबल है वो ये तो पुराने हैं, 8085, 8086, 16 बिट के हैं, ये 8 बिट का था. देन दिस इज पेंटियम आया, फिर अभी i7, i3, i9 चल रहा है. So that has bigger memory span, 64 bit and all about that. हमने अपने लैब में पीसी यूज किया है, खरीदा है from a project and it is i9 series and this is costing 1.85 lakhs. So, but the speed is marvelous, superb. So what we need is, it is working accordingly. यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट किसी को? No, sir. Okay, good. Then now we have
lay out the structure of programmable logic controller PLC. So what it has an input device, it has an output device, and we have a CPU. अब CPU में क्या हो रहा है, how it is happening in CPU, what is happening in CPU, आपको अगर कोई देख के मालूम हो जाए कि इसके अंदर क्या प्रोग्राम लिखा है. फॉर एग्जांपल आपने सी में प्रोग्रामिंग की होगी, जो लोग फर्स्ट ईयर में कुछ प्रोग्रामिंग कराई जाती है, सी में प्रोग्रामिंग की होगी, या कुछ लोग मैटलैब में प्रोग्रामिंग करते हैं. तो आप अपना प्रोग्राम जो आप लिखते हैं वेरियस कमांड्स, उसको देख के आप बता देते हैं कि इसमें क्या हो रहा है. ओके. उसी तरीके से पीएलसी में जो प्रोग्रामिंग को हम शो करते हैं, जो डिस्प्ले करते हैं, वो हम करते हैं लैडर डायग्राम में. वो लैडर डायग्राम कुछ इस तरीके का होता है. दिस इज कॉल्ड लैडर डायग्राम. लैडर डायग्राम देख के हम बता सकते हैं कि इसके अंदर क्या प्रोग्राम हुआ है, राइट. और नहीं तो हम कैसे इसको प्रोग्राम कर सकते हैं. हाउ टू ड्रॉ ए लैडर डायग्राम and how to read a ladder diagram. Both are equally important, right? So that is to be learned, and that is to be understood properly, and that we will learn, in this course, that this is the ladder diagram, and how this will work. How this will work. ओके. सो लैडर डायग्राम का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैडर डायग्राम? ये आप देख रहे हैं कैपेसिटर साइज में कुछ चीजें दिखाई गई हैं. ओके. कंस्ट्रक्शन ऑफ कैपेसिटर साइज, आई मीन लैडर डायग्राम में आप देख रहे हैं ये यहाँ पर, ये दिस ये हम देख रहे हैं, ये this is B, these are contactors, right? Okay, and that is called contactors. ये कहीं कहीं इस तरीके से दिखाया जाता है, and at some places it is shown here. At some places it is shown like this. तो इसका मतलब क्या है कि जैसे हमने रिले में पढ़ा था, नॉर्मली ओपन एंड नॉर्मली क्लोज्ड. सो जब ये नॉर्मली ओपन है तो कुछ हो रहा है, जब आप इसको क्लोज करेंगे तो कोई एक्शन होगा. उसी तरीके से नॉर्मली क्लोज में कुछ हो रहा है, जब आप इसको ओपन करेंगे तो कुछ एक्शन होगा. तो ये तरीका है शो करने का, जहाँ पर ये क्रॉस नहीं लगा हुआ है. आई मीन दिस काइंड ऑफ सिग्नल इज अ कॉन्टैक्टर फॉर normally open. Okay, and this is the symbol for any contactor that it is normally closed. So this is how we demonstrate it. Normally open, normally closed क्या है, हम ऑलरेडी रिले में डिस्कस कर चुके हैं, राइट. नॉर्मली ओपन का मतलब ये होता है कि जब आपका जो आपका रिले का स्टेटस है, आई मीन जब रिले ऑपरेट कर रहा है, जब ये आई मीन वंस दिस पोजीशन विल चेंज, जब ये नॉर्मली क्लोज का मतलब ये है कि जो मैंने लास्ट टाइम पर डिस्कस किया था, इफ यू रिकॉल, नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज. सो अगर आपका इनपुट सिग्नल नॉर्मल कंडीशन में रिले आपका काम कर रहा है, कोई सिस्टम काम कर रहा है, और जैसे आपने उसको
ओपन किया तो सिस्टम काम करना बंद कर देगा। उसी तरीके से नॉर्मली ओपन में जब आपका सिस्टम ओपन है एंड रिले इज नॉट वर्किंग, जब आपने उसको क्लोज कर दिया तो रिले विल स्टार्ट फंक्शनिंग। सो दैट इज हाउ तो यहाँ हमने डिस्कस किया था वही चीज उसको वहां पर दिखाई जाती है लैडर डायग्राम में। ये नॉर्मली ओपन था कि नॉर्मली क्लोज था। फ्रॉम दिस काइंड ऑफ सिंबल it is shown that whether the system, this particular contactor was normally open or it was normally closed, right? So just by seeing the ladder diagram, you'll be able to guess that it is normally open or it is normally closed, right? That is very very interesting. अब इसमें बहुत सारी चीजें आती है कि साहब इनपुट कौन सा टर्मिनल है, आउटपुट कौन सा है। इसमें मोटर को हमें दिखाना हो कहीं तो वो कैसे दिखाएंगे, रिले को दिखाना हो वो कैसे दिखाएंगे, कोई अलार्म दिखाना हो, बजर दिखाना हो, कुछ दिखाना हो तो वो कैसे दिखाएंगे, तो उसका ऑपरेशन कैसे दिखाएंगे। सो एवरीथिंग यू विल बी एबल टू सी ऑन द लेटर डायग्राम। एंड देन वी विल इसको समझाने के लिए वी विल मेक सम लेटर डायग्राम फॉर लॉजिक गेट्स। जैसे आपको कोई लॉजिक गेट का ऑपरेशन है, उसका आप पीएलसी डायग्राम कैसे बनाएंगे, क्या कैसे करेंगे। सो ऑल दिस थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हाउ टू मेक लेटर डायग्राम and how to read letter diagram, both we will study tomorrow, because it is I have just given the introduction of this because it's a long process. तो अभी अगर हम शुरू भी करें तो बीच में interrupt करना पड़ेगा. So I'm stopping here, and from here I'll start tomorrow how to make the ladder diagram and how to read the ladder diagram. That is very very important. पूरा PLC अगर आपकी समझ में आ जाएगा, अगर आप ladder diagram समझ में आ जाए तो ओके। सो ये आता है कि ये ladder diagram है और आप इसको एक्सप्लेन करिए कि क्या हो रहा है सिस्टम में, हाउ PLC इज वर्किंग। ये अक्सर पूछा जाता है कॉम्पिटिशन्स में, एग्जाम में। सो अगर आपको ladder diagram पढ़ना नहीं आया, ladder diagram बनाना नहीं आया, so how will you do that? You will not be able to do that. So any question, anybody, any doubt if you want to ask, you are welcome to ask. So what are the rules of ladder diagram, ladder programming? Okay, so as I said, as the role of programming in C language, how you write C language, there are certain commands. How you write program in Python, there are certain commands, right? You write certain commands, that you follow certain sequence, include stdio.h, whatever, header files, and then you go on writing the instructions, then you use for loop, while loop, whatever, and then return. So that's the way you write program in C language or in Python language. So there is way, by seeing the program you can analyze that, okay, wow, how my system will work, and that is how you define in programming. Similarly, in PLC there is no C language, right? So there is a way to write the program that is called ladder diagram. So a diagram is constructed in PLC in such a way that you can, define and understand the operation of PLC, what's happening. You can define your own, or you can understand also that if it is done by someone else, then how it is working, you should be able to understand. So basically, it is a tool to design the operation of PLC and to read what is going on in the PLC. Is this clear? Yes, sir. Okay. And that's what we are going to study, from tomorrow, that how to draw the ladder diagram and how to read the ladder diagram. That's what we're going to study from tomorrow, which is very very important. Maybe 2 lectures or 3 lectures I'll devote on this only. If this is clear, then we will move forward very comfortably. Any other doubt for anyone? Sir, how it is better than other embedded system? Well, it is a part of embedded system. I mean, it is not. It is one of the application of embedded system. So embedded system could be microcontroller based, could be
could be microprocessor based, could be DSP based. These are all embedded systems. So betterment in terms of the previous relay system, the previous conventional relay system where there was no automatic control, there was no monitoring, there was no chances of errors were quite high. If one wire burns, then you don't know from where it burns. So whole system was to be replaced. Whole system was in stuck. It stopped working. So these are the advantage of this PLC system. PLC system is an application of embedded system. It is derived from embedded system. तो microcontroller आपका यूज हो रहा है उसके अंदर, that is an example of embedded system, right? So there is no separate comparison of embedded system with PLC system. PLC is an application of embedded system, right? Okay, sir. Okay, if no other question, then I'll move forward. I'll ask again. Samina Farooq is there in the class? No? Yes? No, sir, she's not there. Just inform her that by today she should contact me. Otherwise, I'll be having no other option except to put 0 and submit the marks because it is already delayed. So just inform her to contact me today itself, maybe on WhatsApp. You can give message to me, then I'll respond what to do. Otherwise, I'll put 0 and then literally out of 8 experiments, only one she submitted, and that is also late. So I cannot be in a position to help her without the reports.